Danube was in news recently. It is the second longest river of Europe. Which one is the longest one? Volga is the longest. अच्छा यहाँ लिखा ही है ना, after Volga. Volga is the longest one. Where does Volga flow? Russia. है ना, वो रशिया के एकदम नॉर्थ वेस्ट से फ्लो होना शुरू होगा एंड इधर कैस्पियन सी में आके गिरेगा. तो इट इज द लॉन्गेस्ट वन इन यूरोप. उसके बाद डेन्यूबे. तो व्हाई वाज इट इन न्यूज? अभी व्हाट हैज हैपेंड इन ब्लैक सी, देयर वाज अ ग्रेन डील. ग्रेन डील क्या था? रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, बट यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड. यूक्रेन में आपने ज्योग्राफी में स्टेपीज के बारे में पढ़ा होगा. दोज आर टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स. नाउ उन ग्रासलैंड्स में दोज ग्रासलैंड्स आर प्रीटी फर्टाइल, अनलाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नॉट वेरी फर्टाइल, बट ग्रासलैंड्स आर प्रीटी फर्टाइल, स्पेशली जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, राइट? So they can easily be converted into, when we'll come to studying environment or science and technology, they will also understand that wheat is also a grass. Wheat or rice are types of grass. तो वहां पे wheat grow कर पाना बहुत easy रहा. इसीलिए आप if you go to Americas also, जो पहले ग्रासलैंड वाले रीजन हुआ करते थे, दे हैव कन्वर्टेड इनटू लार्ज व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स. तो यूक्रेन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट ड्यू टू वॉर initially what happened, even there civilian ships or ships which were carrying food grains could not go from Black Sea to outside part. So a deal was signed between Russia, Ukraine with the intermediation of United Nations and Turkey कि हम क्या नहीं करेंगे, हम ये wheat का आना जाने पे restriction नहीं डालेंगे. But recently Russia has gone out of it. तो फिर wheat की availability पे impact पड़ सकता है in the world, and wheat is one of the highest consumed food grain in the world. It would lead to inflation throughout the world. Inflation होगा तो उसके अपने repercussions होंगे. तो अभी when Russia again withdrew from this deal, we don't care. हम ये जो exception दे रहे थे कि wheat carrying ships would not be affected, we are not much worried about it now. तो Ukraine is looking for other mechanisms जहां से वो अपने wheat को export कर पाए, and one option that is coming is Danube river. Now देखो, this river is also falling in Black Sea, and this river is also going through Ukraine. Note it carefully. अगर आप Danube river को देखोगे, ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में फ्लो कर रहा है. It originates in Germany. Here you will see it originates in Germany, goes from Austria, Hungary, Slovakia, Serbia, Croatia, Romania, Bulgaria, थोड़ा सा मोल्डोवा में भी, और यहाँ पे क्या मोल्डोवा के बगल में यूक्रेन. डू यू रिमेंबर यूक्रेन्स नेबरिंग कंट्री? कौन बताएगा? यूक्रेन्स नेबरिंग कंट्री. अरे हंगरी, स्लो पोलर बियर, रशिया, रोमिंग इन मोल्डोवा, ये जो लेट आए हैं. नहीं सॉरी, नहीं, यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज बताओ. लेट भी आते हो, पढ़ते भी नहीं हो, कैसे चलेगा? अरे घबराओ मत, आ जाओ यार, मैं मजाक कर रहा हूँ. ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है करंट अफेयर्स की. ओके, हाँ, तो कौन बताएगा यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज? बताइए. Moldova, right? So this Moldova just adjacent to Ukraine. So Ukraine say this river is also flowing. So what now plan is, why not use this river to make food grains go to, let's say, Romania की territory में, and वहां से export हो पाए. For that purpose, it was a news. You would see, अभी हमारा special focus था Sulina channel पे. It's a distributary of river Danube. If you'll come here, you would see that the river distributes into multiple distributaries. So it's a distributary of river Danube that contribute to forming of Danube Delta,
The other two main branches of the river are Shelia branch and Svantu Gheorghe branch. News क्या था? The Danube Delta has provided Ukraine with an alternative passage for its grains after Russia withdrew from Black Sea grain deal recently. The deal was earlier brokered by UN and Turkey and is used to provide safe passage for cargo ships carrying grains from Ukrainian Black Sea ports of Odisha, Chornomorsk and ये ports हुआ करते थे जिससे Ukrainian port से grains was allowed. Now they are looking at Sulina channel. क्या through this will be able to export. So for this purpose, it was in news. We should have understanding of this also. We should have clarity on this also. Okay.